Hello, students. You were reading English Chapter 1 exercises and thinking about language. In thinking about language, the first topic was adverbs. In adverbs, you have read that when we add ly to an adjective, it becomes an adverb and we can use that in some sentences. I hope you have revised this and you have done your homework by adding ILY and substituting y in these words. Now we are studying the use of if not and unless. Let's understand what does this mean. If not and unless. We can use them as a substitute. Either we can use if not और we can use unless. मतलब कि एक सेंटेंस में हम या तो if not यूज़ कर सकते हैं और उसकी जगह पे हम अनलेस भी यूज़ कर सकते हैं. इफ़ नॉट एंड अनलेस ये दोनों ही कंडीशंस को शो करते हैं. इफ़ नॉट एंड अनलेस ये वर्ड्स हम सेंटेंस में तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई कंडीशन होती है. So just read here. Imagine that Maggie's mother told her, "You'll feel awful if you don't finish your history lesson. You'll feel awful." तुम awful feel करोगी if you don't finish your history lesson. अगर तुमने history lesson finish नहीं किया. What does this mean? That here is a condition. अगर तुमने history lesson finish नहीं किया, then you will feel awful. She could also say, यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में जो कंडीशन है इफ़ यू डोंट, हियर इफ़ एंड नॉट इज़ यूज्ड, सो इसकी जगह पे हम अनलेस भी यूज़ कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो से दैट एज यू विल फील ऑफुल अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन. कुछ ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया स्टूडेंट्स? लाइक द सेंटेंस कंटेन्स two phrases. First phrase is a complete sentence, you will feel awful, and the second phrase describes and condition. Okay, you will feel awful unless you finish your history lesson. Unless means if not. Sentences with unless or if not are negative conditional sentences. Unless और if not से start होने वाले जो sentences होते हैं वो negative conditional sentences होते हैं. Notice that these sentences have two parts. The part that begins with if not or unless tells us the condition. जो पार्ट्स इस पूरे सेंटेंस में दो पार्ट्स हैं. जो पार्ट इफ़ नॉट या अनलेस से स्टार्ट हो रहा है वो हमें वहाँ की कंडीशन बता रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस के होने या ना होने के लिए कंडीशन क्या है. द पार्ट हैज़ अ वर्ब इन द प्रेजेंट इन द प्रेजेंट टेंस. इस पार्ट में जो वर्ब होती है वो प्रेजेंट टेंस में होती है. लुक एट द वर्ब्स डोंट फिनिश इन द सेंटेंसेस अबाउ. अबाउ सेंटेंसेस में हम पढ़ेंगे unless you finish your history lesson. Now finish is a present and if it would be past, finished will be used. Okay, so if not जो नेगेटिव कंडीशंस होती है उनमें हम लोग प्रेजेंट वर्ब्स का यूज़ करते हैं. द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स अस अबाउट अ पॉसिबल रिजल्ट. एक कंडीशन वाला पार्ट होता है और कंडीशन वाले पार्ट में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. ओके, दूसरा पार्ट जो होता है वो पॉसिबल रिजल्ट होता है. दैट अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो क्या होगा. देन ये सेकेंड पार्ट जो होता है पॉसिबल रिजल्ट वाला वो होता है फ्यूचर में. इट टेल्स अस व्हाट विल हैपन इफ समथिंग एल्स डजंट हैपन. द वर्ब इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टेंस. इस पार्ट में जो वर्ब होती है वो फ्यूचर टेंस में होती है. यू विल फील ऑफुल. ओके, तो देन यू विल फील दैट इज अ फ्यूचर वर्ब. Let us read some of the sentences. There won't be any books left. There won't be any books left. This is the result. यहाँ हमारे पास कोई भी बुक्स नहीं बचेंगी unless we preserve them. Unless is used for condition, we preserve them. अगर हमने उन्हें preserve करके नहीं रखा. Unless is used as if not. Okay. Second sentence, you won't learn your lessons. You won't learn your lessons. This is the result. तुम अपने lessons learn नहीं करोगे. If you don't study regularly, अगर तुमने regularly study नहीं किया. It is a condition. अगर तुमने regularly study नहीं किया, condition ये है और result क्या निकलेगा? You won't learn your lessons. Third sentence is, Tommy will have an accident. Tommy will have an accident is a result. कंडीशन क्या है? अनलेस ही ड्राइव्स मोर स्लोली.
जब तक वो स्लोली ड्राइव नहीं करेगा उसका एक्सीडेंट हो जाएगा. Complete the following conditional sentences. Use the correct form of the verb. Here I am telling you the sentence, completing the sentences and practice it at your home. If I don't go to Anu's party tonight. Now in these sentences, if not and unless sentences are given, and we have to write the result sentences that will be in present verb. Okay. इफ़ आई डोंट गो टू अनुज पार्टी टुनाइट. अगर मैं अनु की पार्टी पर नहीं गया, दैट इज़ एन कंडीशन. अगर हम नहीं गए तो रिजल्ट क्या होगा? शी विल बी एंग्री. ओके. तो प्रेजेंट कंडीशन जो थी वो प्रेजेंट वर्ब यूज़ करती है, और जो सेकंड पार्ट होता है जिसमें रिजल्ट होता है वो फ्यूचर वर्ब यूज़ करता है. सो इफ़ आई डोंट गो टू अनुज पार्टी टुनाइट शी विल बी एंग्री. Second sentence is, if you don't telephone the hotel to order food. If you don't telephone the hotel to order food. अगर आप होटल में फूड के लिए टेलीफोन नहीं करोगे, दैट इज़ एन कंडीशन, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट विल बी इन फ्यूचर. मे बी द मील विल बी ओवर. ओके. इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, यू यू विल नॉट गेट योर मील. आपको आपका मील नहीं मिलेगा, आपको आपका फूड नहीं मिलेगा. Unless you promise to write back. Unless you promise to write back, I will not write back to you. Fourth, if she does not play any games. If she does not play any games, she will become dull and lazy. Fifth, unless that little bird flies away quickly. Unless that little bird flies away quickly, the cat will paw him. So, the sentences contain one negative sentence and the other one is positive outcome. Now, next topic is writing. In writing, we will learn to write a formal letter. I am describing you here the parts of a formal letter, and just try to write down it in your notebook. A new revised volume of Isaac Asimov's short stories has been released. Order one set. Write a letter to publisher Mindframe Private Limited, 1632 असफ अली रोड. हमें किसको लेटर लिखना है? पब्लिशर को. कहाँ के पब्लिशर को? माइंड फेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के पब्लिशर को लेटर लिखना है. किसके लिए? हमें एसिमोव शॉर्ट स्टोरीज़ की जो न्यू रिवाइज वॉल्यूम है उनका वन सेट ऑर्डर करना है, और उनका एड्रेस दे रखा है 1632 असफ अली रोड, न्यू दिल्ली. उनको रिक्वेस्टिंग करना है दैट इज सेट टू बी सेंड टू यू बाय वैल्यू पेएबल पोस्ट. वैल्यू पेएबल पोस्ट से उनको आपको एक सेट मंगवाना है बुक्स का. एंड गिविंग योर एड्रेस, योर लेटर विल हैव द फॉलोइंग पार्ट्स. आपका एड्रेस देने के बाद कुछ पार्ट्स होंगे आपके लेटर में. तो एक फॉर्मल लेटर कौन कौन से पार्ट्स कंटेन करता है? फर्स्ट पार्ट इज एड्रेसेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर. एड्रेसेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर. सेंडर का एड्रेस मतलब कि आपका एड्रेस, एंड रिसीवर का एड्रेस मतलब कि आप जिसको लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस. सेकंड पार्ट इज सल्यूटेशन. हम ग्रीट करते हैं डियर सर, हेलो मैम, दैट इज द सल्यूटेशन. द बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर कंटेन्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेटर. हम क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं. Fourth, the closing phrases and signature. The fourth part contains closing phrases. That means, uh, I will be waiting for your order and your signature with your name. So your letter might look like this. First will be your address, your name, your address, and your city and town. Okay. Then date comes. After date there will be written the addressee's address where we have to write the letter. Here in our address we can write our name, that is my name is Karishma. Second line contains my address. Third line contains my city. Then fourth line contains the date. The next line contains the addressee's address. Here we can write in a formal letter that to the publisher. Then his address is Mindfam Private Limited, to the publisher Mindfam Private Limited. Next we have to write the address 1632 Asaf Ali Road, New Delhi. Okay, this will be the addressee's address. Dear sir, madam is a salutation.
Now here we can write the body of our letter. Next, yours sincerely, this is the completion regards, and your signature. Remember that the language of the formal letter is different from the colloquial style of personal letters. आपके लेटर में जो फॉर्मल लेटर में डिफरेंस होगी, जैसा आप पर्सनल लेटर में लिखते हो वैसी नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, आप पर्सनल लेटर में आई कांट, आई हैव, इस टाइप के जो अब्रिविएशंस यूज़ करते हो, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हो, वो फॉर्मल लेटर्स में नहीं यूज़ कर सकते हो. स्टूडेंट्स, please practice it at your home and be used to write the formal letters. I'll be giving a example letter in the class Google Classroom. Okay, keep studying.